एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। शिप बिल्डिंग और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। हमने अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और सेंटर्स के बीच जॉइंट रिसर्च और कोलैबोरेशन पर बल दिया है। भारत अपने स्पेस अनुभव को क्रोएशिया के साथ साझा करेगा। आतंकवाद को प्रधानमंत्री मोदी ने मानवता का दुश्मन बताया और भारत में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले पर क्रोएशिया द्वारा सहयोग और संवेदना जताए जाने पर आभार व्यक्त किया है। हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि यूरोप हो या फिर एशिया, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए जाने की अपील की है। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। ईयू के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में क्रोएशिया का समर्थन और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच ने कहा कि दोनों देश ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। बढ़ते सहयोग को लेकर के उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच संबंधों को नई दिशा देगा और भी प्रगाढ़ बनाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री की पहल मध्य एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे की सराहना की है। We believe that Prime Minister Modi's initiative on the economic corridor between India, Middle East and Europe is an excellent opportunity. So India, European Arab Emirates, Saudi Arabia, Jordan, Israel and then European ports. This is an opportunity to connect Croatia as a Mediterranean gate to Central Europe and to connect it to India, India's economy and India's market. This year, Croatia presides over the Three Seas initiative connecting Baltic Sea, Black Sea and the Adriatic Sea. So this corridor will get even greater Central European dimension. क्रोएशिया ने आतंकवाद की निंदा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री प्लेंकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के मुक्त व्यापार पहल का भी समर्थन किया है। We have also talked about Indian efforts to conclude the free trade agreement with the European Union, which Croatia supports. We believe that this negotiations will finalize as soon as possible, negotiations about free trade agreement, because that will strengthen our cooperation and it will facilitate easier trade between Croatia and India. और इससे पहले 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर क्रोएशिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच ने उनका भव्य स्वागत किया। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा है। और 3 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा के अंतिम पड़ाव में ऐतिहासिक दौरे के तहत
प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया के राजधानी जाग्रेब के एक होटल पहुंचे और वहां पर उनका स्वागत मोदी के नारों के साथ किया गया। ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे इस मौके पर क्रोएशियाई नागरिकों ने। और अब आपको सीधे ले चलते हैं विदेश मंत्रालय की brief us की ओर, on जहां पर on this ongoing visit of the Prime Minister. We are also joined on stage by Srimati Pooja Kapoor, who's Additional Secretary looking after Central Europe in the Ministry of External Affairs. With that, I invite Secretary West to make his opening remarks, after which we'll take some questions. Sir, over to you. Namaskar. As you are aware, Prime Minister is completing his visit to Cyprus, Canada, and Croatia. And as was just mentioned, this has been an historic visit to Croatia by Prime Minister Shri Narendra Modi. This was, in fact, this has been the first ever visit to Croatia by an Indian Prime Minister. Prime Minister Modi arrived in Zagreb earlier today on this official visit at the invitation of the Prime Minister of Croatia, His Excellency Andrej Plenković. The visit reflects the growing momentum in India-Croatia partnership. It also has importance in the context of the India-EU strategic partnership, and it shows India's growing ties with partners in Central and Eastern Europe. I would also briefly mention the elements of the program. Upon arrival, Prime Minister was received at the airport in a very special warm gesture by Prime Minister His Excellency Plenković. The two Prime Ministers held delegation-level talks. This was followed by signing of agreements. Prime Minister Plenković will host a gala dinner in honor of Prime Minister Modi. The two leaders also took a walk together in the historic city center of Zagreb. As we speak, Prime Minister Modi is also meeting and holding discussions with the President of Croatia, His Excellency Zoran Milanović. Earlier, Prime Minister was accorded a ceremonial reception at the St. Mark's Square in Zagreb, where he also signed the Book of Impressions. Prime Minister laid wreath at the monument to Homeland. During the visit, External Affairs Minister Dr. Jaishankar also held discussions with his counterpart, Minister of Foreign Affairs, His Excellency Mr. Gordan Radman, over a working lunch. Earlier, upon arrival at the hotel, Prime Minister Modi received a special welcome that reflected the cultural and people-to-people ties between our countries. This included chanting of Sanskrit shlokas by Croatian friends, also a short Kathak performance by Croatian artists, a group of Croatian Friends of India, and groups of Croatian students who are studying Hindi language at the Department of Indology at the University of Zagreb, and another group of students from Zagreb also welcomed the Prime Minister. Around 200 members of the Indian Diaspora also welcomed Prime Minister on this landmark visit to Croatia. The two leaders during the delegation-level talks and other occasions have discussed a very broad range of issues. As you're aware, the visit takes place against the backdrop of serious global challenges and flux. The leaders discussed regional and global issues, including ongoing conflicts and other major developments. Cooperation in counterterrorism was a prominent theme of discussions.
Prime Minister Modi thanked Prime Minister Plenković for Croatia's support and solidarity in the wake of the terror attacks in Pahalgam. The two leaders agreed that there is a huge potential to expand trade, investment, and innovation linkages. Some of the areas where there are business linkages include IT, pharmaceuticals, equipment for wind and solar power generation, railway signaling, arms and unmanned vehicles, ports and shipping, tourism and hospitality. A number of new areas of investment, trade and technology collaboration are also being explored. The leaders agreed to strengthen the India-Croatia Startup Bridge initiative. The leaders also agreed to explore increased collaboration in defense, building upon the MOU that was signed 2 years ago. The two leaders then welcomed the signing of 4 documents. These are an MOU on cooperation in agriculture and allied sectors, a program of cooperation in science and technology, a cultural exchange program, and an MOU on Hindi chair at University of Zagreb. The leaders in their discussions also look forward to an early conclusion of the India-EU FTA, which will give a boost to the bilateral trade and supply chain resilience. Another topic of discussion was increasing connectivity, including through the IMEC Corridor Initiative. The leaders agreed on the importance of concluding a mobility partnership agreement. There are an estimated 17,000 strong Indian diaspora in Croatia. A large number are working in various sectors such as tourism, hospitality, healthcare, and construction. A joint leaders' statement is also being issued. Croatia, as you would know, is the youngest member of the European Union. It has also recently joined the Eurozone and the Schengen arrangement. And the visit of Prime Minister Modi comes soon after the unprecedented first ever visit of the College of Commissioners to India in February. And you would recall that the European Commissioner for Mediterranean, Ms. Dubravka Šuica, who is from Croatia, was also a member of the delegation. Prime Minister Modi's visit gives a boost to the growing high-level exchanges between the two countries in recent years. Prime Minister Modi and Prime Minister Plenković had earlier met during the COP26 in Glasgow. President of India, Shri Ramnath Kovind, at the time had visited Croatia in 2019. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and Foreign Minister Radman have earlier met in 2023 and 2021. Last year, the Foreign Office consultation, 11th round, was held. Commerce Secretary of India had recently visited Croatia, where he had held extensive discussions on expanding business and investment ties. And there is a growing economic content in our bilateral engagement. To sum up, Prime Minister Modi's historic visit to Croatia, the first ever by an Indian Prime Minister to Croatia, will act as a catalyst to the expansion of India-Croatia partnership and further strengthen India-EU strategic partnership. Thank you. We now open the floor for questions. Please do identify yourself as you ask your question. Please. Sir, I am Rajneesh from ANI. My 2 questions are here. What is the significance of this visit of PM in Croatia? As well as the second question is, how can Croatia as an EU member serve a strategic partner for India in expanding its engagement with European Union? Okay. Jessica. Hi, sir. This is Jessica Taneja for DD India. You said that counter-terrorism was also part of the discussion, and this is post-Operation Sindoor. And given the cross-border terrorism from Pakistan, what was discussed between the two leaders specifically on that? Mm-hmm. And also about the defense, exploration on the defense collaboration, what can you tell us about that as well? Mm-hmm. You have a question there? सर, मैं शैलेंद्र मिश्र हूँ डीडी न्यूज़ से। जो 4 MOU हुए हैं, अगर इनको थोड़ा सा विस्तार से बता पाएं, चूँकि एग्रीकल्चर, हिंदी चेयर और कल्चरल कोऑपरेशन में। जी सर।
Thank you. The first question regarding the significance of the visit. So as I mentioned, this has been the first ever visit by an Indian Prime Minister to Croatia. That in itself is a landmark, very historic, and it shows the growing engagement between India and the partners in the Central European region. This also, as I also mentioned, has relevance in the India-EU strategic partnership context. Croatia is the youngest member who has joined the European Union, and Croatia is an important partner in pushing a stronger India-EU strategic partnership, and also for an early conclusion of the India-EU FTA. So in addition to the aspects of collaboration that I mentioned during my initial remarks, these are some of the highlights that contribute to the significance of this visit. Croatia, of course, is a country on the eastern coast of Adriatic Sea, and it has an important location in the Central and Eastern Europe. So a whole range of issues and ways to further increase our trade, investment, technology, connectivity, defense, all these sectors were covered. And some of the MOUs that were signed also reflect the areas of cooperation that both countries are looking at, for example, ranging from science and technology to agriculture and allied sectors. On counterterrorism, there was strong support expressed on countering terrorism through whichever means. There is a strong message also conveyed in the joint leader statement that you'll be able to see. Prime Minister Modi expressed his appreciation for the support that was extended by the Croatian leadership in the wake of the heinous terror attack in Pahalgam. On defense, there has been an MOU which was signed a couple of years ago, and the two leaders discussed various ways to extend this cooperation in terms of industrial collaboration, joint ventures, and other sectors where we can work together with each other, especially in the defense field. Thank you. On the documents that were exchanged today, तो जो आज दस्तावेज एक्सचेंज किए गए उसमें से पहला था एक MOU ऑन कोऑपरेशन इन कृषि के क्षेत्र में और एलाइड सेक्टर्स में. क्रोएशिया में उनमें काफ़ी इंटरेस्ट है भारत के साथ इस विषय में कोऑपरेशन बढ़ाने का. इनके कृषि क्षेत्र के जो मंत्री थे वो भी वहाँ उपस्थित थे, और उन्होंने भी अपने वार्तालाप में इसका काफ़ी जिक्र किया कि वो इसमें काफ़ी इच्छुक है भारत के साथ कृषि क्षेत्र में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए. डेलीगेशंस हो सकता है एक्सचेंज होंगी और इसमें और कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए जाएंगे. दूसरा जो था डॉक्यूमेंट वो एक प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. उसमें भी अलग अलग विषयों से अलग अलग तरीके से इसमें कोलैबोरेशन बढ़ाया जाएगा. रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच जॉइंट कॉल्स फॉर रिसर्च वगैरह के माध्यम से इसमें कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा. कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी एक साइन हुआ. उसमें अलग अलग जो क्षेत्र हैं कल्चरल एक्सचेंज के उसमें फोकस किया जाएगा. और यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ाग्रेब जिसमें कि एक इंडोलॉजी डिपार्टमेंट करीब 60 वर्ष से है, और यहाँ पर इंडोलॉजी का काफ़ी लंबा ट्रेडिशन रहा है. यहाँ यूरोप में 18वीं सदी में एक क्रोएशियन स्कॉलर ने पहली बार संस्कृत का ग्रामर पब्लिश करी थी.
यहाँ पर हिंदी में काफ़ी उत्साह है। जैसे मैंने कहा था कि जब प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ होटल में, तो बहुत अलग अलग क्रोएशिया के लोगों ने संस्कृत में श्लोक से लेकर क्लासिकल डांस, इंडियन क्लासिकल डांस, कथक और अन्य तरीक़ों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। हिंदी में काफ़ी रुचि है और योगा और आयुर्वेद में भी काफ़ी रुचि है क्रोएशिया में। पिछली बार यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अनेक इवेंट्स ऑर्गेनाइज की गई थी और यही एक आगे भी हम आशा करते हैं इसका होगा। तो ये 4 जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अलग अलग दिखाते हैं, फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू कृषि टू कल्चर टू हिंदी स्टडीज़। Thank you, sir. With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this press briefing. You will find all the documents on the website of the Ministry of External Affairs. That includes the details of the 4 MOUs as also the joint statement. Thank you very much. आप देख रहे थे विदेश मंत्रालय की ये स्पेशल प्रेस वार्ता, जो भारत और क्रोएशिया के बीच सहयोग में क्या कुछ बड़े मील के पत्थर स्थापित किए गए, उनकी डिटेल से जानकारी देते हुए आज ये बताया गया कि दोनों ही जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और उसमें 4 प्रमुख क्षेत्रों में MOUs साइन किए गए। तन्मय लाल जो कि सचिव हैं पश्चिम, सेक्रेटरी वेस्ट, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और बहुत सारे सेक्टर्स में एक्सप्लोर किए जा रहे हैं जो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उसको और मजबूत कैसे बनाया जाए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के नए स्टार्टअप ब्रिज की बात चल रही है, इनिशिएटिव की बात चल रही है, जिसको मजबूत करने पर चर्चा की गई है। रक्षा क्षेत्र में पहले ही समझौते हो चुके हैं, कैसे उसमें इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस किया जाए और कैसे आगे जाते हुए जॉइंट एक्सरसाइजेस की जाएँ, इसको लेकर के भी JV कंपनियों के बीच में जॉइंट वेंचर्स कैसे किए जाएँ, उसको लेकर के भी समझौता हुआ है। कृषि क्षेत्र को लेकर के जो समझौता हुआ है उसका जिक्र किया, संस्कृति और जो वहाँ पर भाषा को लेकर के जो समझौते हुए हैं उनको लेकर के भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं और क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविच के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने आपसी हितों और साझा मूल्यों को लेकर के चर्चा की।